Hello students, today we'll discuss the topic evaporation from the chapter Matter in Our Surroundings. You all may have observed the phenomenon of evaporation in your daily lives. For example, you take wet clothes and dry them up when exposed in air. आप गीले कपड़ों को आप धूप में या फिर हवा में रखकर सुखाते हैं और वो बिना बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर रीच किए जो हमारा गीले कपड़ों का पानी होता है वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है. Also, you have observed that if you leave an uncovered pan, the water in the pan slowly escapes into gas phase. जो अगर हम किसी बर्तन में कुछ पानी भरकर रख दे कुछ दिनों के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि वो जो पानी है वो उस पैन में से थोड़ा थोड़ा करके इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है. सो दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation. Boiling point reach किए बिना किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमारा एक जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है. सरफेस फिनोमिनन का मतलब कि हमारे जो भी पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर होंगे वो पार्टिकल्स अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैस स्टेट में चेंज हो जाएंगे. Now, evaporation's cause of evaporation. The particles have random movement. We already have studied the properties of particles of a matter, in which we said that the particles are always in motion. So, the particles in motion collide with each other and gain kinetic energy. These kinetic energy are enough to overcome the attractive forces of other neighboring particles. तो जो हमारे particles होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा मोशन में होते हैं और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ा होता है. तो जैसे ही हम उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं पार्टिकल्स को तो हमारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिस वजह से उनकी मोशन इंक्रीज हो जाती है विच लीड्स टू डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है इंक्रीज होने लग जाता है. ये पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं कि ये फ्लो कर सके एंड दैट्स हाउ दे चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म. तो इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हमारे पार्टिकल्स में हमारा जो है स्टेट चेंज हमें ऑब्जर्व होता है. इवेपोरेशन का प्रोसेस हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. In this figure you can see that there are particles which are at the surface and have high energy, therefore can be evaporated easily, but the particles inside in the bulk of the water have low energy and remain as liquid. So that's why we say that evaporation is a surface phenomenon, because the particles at surface will have least force of attraction with other particles of the liquid, and that's why will have high energy to get evaporated. Coming on to factors affecting evaporation. There are many factors affecting the rate of evaporation. Rate of evaporation means that how fastly the evaporation occurs. Rate of evaporation का मतलब होता है कि evaporation हमारी कितनी जल्दी हो रही है, कितनी जल्दी हमारा एक लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो रहा है. इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. नंबर 1 सरफेस एरिया, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड नंबर 4 इज विंड स्पीड. So with increase in surface area there is an increase in rate of evaporation. जैसे ही हम surface area बढ़ाते हैं हमारी evaporation का rate भी क्या करता है, increase कर जाता है. To explain this I'll take the example of drying up the wet clothes. जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं हम उस एग्जाम्पल में ये सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. ये चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं. जब हम एक कपड़े को पूरी तरह से खोल कर डालते हैं तो हमारे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर सरफेस की तरफ आ जाते हैं. सरफेस की तरफ आने से उनके पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, कम. क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी कम होती है तो थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर मेरे सरफेस पे आए हुए वाटर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज कर जाएं. सो दैट्स वाई विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया द इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस बिकॉज द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस लीस्ट
force of attraction when they are at the surface. Next, with increase in temperature, the rate of evaporation also increases. टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एंड एज वी सेड अर्लियर दैट विद इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases. So with increase in temperature the kinetic energy increases and force of attraction decreases, which makes the particle easy to change their state from liquid to vapor form. Third factor is humidity. Now, with increase in humidity, the rate of evaporation decreases. Now, please remember that it is the only factor, humidity is the only factor with whose increase the rate of evaporation decreases. Humidity is referred to as the amount of water vapors in the atmosphere. Humidity हमारी अमाउंट होती है कि कितना हमारे वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कितने एयर पार्टिकल्स जो हैं वाटर वेपर के साथ जुड़े हुए हैं. So with increase in the amount of water vapor present in air, that is with increase in humidity, the rate of evaporation decreases. We will take an example to explain this fact. Suppose you have one pencil and you have to work with only one pencil, then you will not be needing to take another pencil from any other person. जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इवेपोरेशन का रेट जो है वो स्लो कर देता है, बिकॉज जितनी उसकी कैपेसिटी है ऑलरेडी उसके पास उतने वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं. सो इट डज नॉट अलाउ एनी मोर वाटर वेपर्स टू कम इनटू द एटमॉस्फेयर, thus decreasing the rate of evaporation. Last factor on which evaporation depends is wind speed. With increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. जैसे ही हमारे जाती है या हमारी तेज हवा चलने लग जाती है तो वो वाटर वेपर जो मेरे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो विंड की वजह से क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं. तो इस वजह से हमारे पास ऐसी एयर अवेलेबल हो जाती है जिसमें वाटर वेपर की अमाउंट जो है वो कम होती है. अब क्योंकि एयर में वाटर वेपर की अमाउंट कम है तो हमारा इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा ताकि हमारे एयर में और वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें. Next, coming to the topic of evaporation causes cooling. We all have experienced that on evaporation of a liquid, the cooling sensation is observed. When a liquid evaporates, the particle of the liquid absorb heat from the surroundings and evaporates. Example, if you take a nail polish remover, जब आप एक नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ में डालेंगे तो वो जो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन प्रेजेंट है वो हमारे हीट absorb कर लेता है. That heat comes from the palm or your hand. So the heat of your hand transfers to the particles of the acetone or nail polish remover and thus causing the evaporation of the particles of nail polish remover. As the heat is absorbed by the particles of your hand are left with lower energy particles which will have low temperature and thus causing a cooling sensation on your hand. You may have also experienced that some people sprinkle water on the roof or ground because whenever water evaporates, it leaves a cooling sensation behind. During summers we wear cotton clothes to keep us cool. होता है वो एक good absorber होता है of sweat. तो हमारा कॉटन क्लॉथ जो है वो हमारे स्वेट के वाटर पार्टिकल्स को, लिक्विड पार्टिकल्स को एयर में ज़्यादा एक्सपोज कर देता है और उसकी इवेपोरेशन जो है आसान हो जाती है. सो दैट्स वाई जैसे ही जो कॉटन वाला क्लॉथ है उसमें से हमारे स्वेट पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं तो हमें पीछे कूलिंग सेंसेशन महसूस होती है. दैट्स वाई कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू बी वोर इन समर्स. We can see the presence of water vapor in air by doing a small activity. You can take a glass of water or ice and put it in the atmosphere for few minutes. After few minutes you will observe that the outside surface of your glass is covered with tiny water droplets. These tiny water droplets were not present before. So where did these droplets came from? These droplets
came from the atmosphere. These are the water vapors present in the air, which when came into the contact with the surface of cold utensil or cold glass, gets condensated and change their state from gas to liquid form. You can also observe the process of evaporation in your desert coolers. Last topic is difference between evaporation and boiling. As we started earlier, that evaporation occurs at a temperature below boiling point, but boiling takes place at a definite constant temperature. Evaporation is a surface phenomenon, whereas boiling is a bulk phenomenon. Bulk here indicates that the particles present beneath the surface can also get converted to gas form. Evaporation is a slow process, whereas boiling is a rapid process. Thank you.